बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सामने मैंने वाइट बोर्ड पे क्या लिखा है, गुड एंड बैड हैबिट्स और क्वालिटीज़ विच आर आस्क्ड इन ISB एज वेल एज इन इनिशियल। बाद दफ़ा इनिशियल इंटरव्यू में भी आपसे लिखवाई जाती हैं और ISB में तो प्रॉपर ये फॉर्म में भी लिखवाई जाती हैं और पूछी भी जाती हैं इंटरव्यू में भी कि आपकी गुड क्वालिटीज़ कौन सी हैं और बैड क्वालिटीज़ कौन सी हैं। आज इसी हवाले से ये लेक्चर आपको मैं दूंगा। इस लेक्चर को आपने शुरू से लेके आखिर तक गौर सुनिएगा और साथ साथ जो अहम पॉइंट्स हैं वो आप नोट करते जाएं। कागज़ पेंसिल ले लें, उस पर आप लिखते चले जाएं और इस वीडियो को देखने के बाद अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। तो अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता कि गुड और बैड हैबिट्स या क्वालिटीज़ कैसे लिखनी है, तो बार बार मुझे व्हाट्सएप कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाऊँ। और अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय समवन रिगार्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ISB. This question is asked in different formats, but the answer which they are looking for is related to your personality. Questions are: write 3 good and bad qualities of yourself, or write 3 good qualities of your friend, or what you like about your friend. Actually, they are your qualities. Write 3 bad qualities of your friend, or what is it that you don't like in your friend. Which are the 3 qualities of yours that your friends like? Your good qualities. Which are the 3 qualities of yours that your enemies like? Your weaknesses. What is the purpose of these questions? The first purpose is to see if you know about your own self or not. It's a SWOT. SWOT जब मैं कहता हूँ तो इससे क्या मुराद है? SWOT analysis of yourself. SWOT stands for strength, weaknesses, opportunities, threats. If a person knows about him herself, he can handle any situation and has a better judgment power. The second purpose of these questions, like almost all of the questions at ISB, is to see if you are telling the truth or lies. Since this is a PET question in ISB, it's better to prepare it first. Like always, here again, I'll to tell you to think about yourself and try to come up with your answers. Because if you write your real weaknesses, bad habits, bad qualities, and good traits, good qualities, strong points, then you would be able to answer exactly the same as where if asked. Here is what you have to think before answering these important questions. Number 1, ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो सारे आप लिखते चले जाएं और इन तमाम बातों को अपने जहन में आपने रखना है और जहन नशीन कर लें। नंबर 1 इज डोंट टेल लाई. Write your good things which are in you and bad which are. Number 2, note if you are writing a bad habit, it should not be that bad which would make a negative impact on selectors. For example, I lie, I cheat, etc. Number 3, don't try to be too positive, which would clearly show you are lying. You are lying. For example, I'm very honest, I never lie, etc. Everyone lies, it's human nature. Okay, the next point is
If you are very creative, try to portray your negatives in a way as if they appear to be positive. For example, sometimes in order to keep up with my study schedule, I cut my time which I plan to spend with my family. This is an example, don't copy please. Here are some of the examples of good habits. You can write these habits. Number 1, I try my level best to be punctual. Number 2, I try to be social. Number 3, I respect elders. As for me, respect of elders is very important. And for bad habits, number 1, I'm not regular in prayers. If of course you are not. If you are, you should write in good habits. Number 2, I take a lot of tea. Similar can be made, but such should be written at the end. Number 3, I am a miser, meaning conjuice. I hope you have got the idea. Thank you very much for listening me, for watching this video. Now students, note my WhatsApp number 03445969 is my WhatsApp number. You can join my WhatsApp group as well. WhatsApp me, I will add you in my WhatsApp group. At the end, Durood Sharif. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alayhi wa sallama bima huwa ahluh sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.